end when the test is complete, because we have a time limit in completing this 25 questions. So how I'll attempt and what approach I am going to take to solve these questions, that I will be explaining to you, और ताकि तुम लोग वो tips and tricks use कर सकते हो when actually you will be solving the questions. So okay, everyone ready? चालू करें अभी, Yes, सब ma'am. बच्चे भी आ गए? Yes, ma'am. Okay. So I have read and understood the instructions, and now I'm going to attempt my test. There are still people coming in. Okay. ये क्या है? Your test will be submitted if you try to sneak away from the test screen. Okay, back to test. Which among the following? Okay, there is Samiksha is trying to come. Which among the following is a calibration parameter for UV visible spectrophotometer? A. Control of wavelength. B. Control of absorbance. C. Resolution. D. Control of transmitted radiation. E. Spectral width. Slit width. Now, what are your options? The parameters are only A, B, D. The parameters are A, B, C, and E. The parameters are A, B, and C only. And the parameters are A and B only. Now, if you have studied the calibration of UV spectrophotometer, UV spectrophotometer, control of wavelength is a parameter. There are students coming in. Control of wavelength is one of the major parameter. Also control of absorbance. ठीक है, अगर तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने अगर शायद पढ़ा नहीं होगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, just look at the option. Wavelength is necessary to be controlled because in the end वो transmitted UV radiation का wavelength measure होता है, तो उसका जो wavelength window है उसको calibrate करना important होता है. So according, if in case I don't know what are the parameters, I am going to use my common sense. Control of wavelength important है. Control of absorbance भी important है. Now, in what terms am I saying A, B is definitely the options, because all four options have A and B. That means A and B पक्का दो parameter है ही है. Remaining C is resolution. Resolution is also a very important factor, one of the parameters which is done in the UV spectrophotometer. So definitely C है. Abhi you can see D is there in only one option, which is option number 1. A, B, and B only. Abhi, how am I eliminating this option? Because I'm damn sure A, B, C is definitely one of the parameters. Okay. So this I'm telling in terms if I don't know the parameters. Next is control of transmitted radiation. अभी ये D option तुम्हारा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में डी नहीं है. सी लेकिन दो ऑप्शंस में है. सो आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि सी रेजोल्यूशन होता ही होता है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में. तो अगेन आई विल एलिमिनेट ऑप्शन डी. ए एंड बी ओनली नहीं है, रेजोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. नाउ आई एम लिटिल डाइसी अबाउट द कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल स्लिट विड्थ. Now, the control on transmitted radiation is not that important in UV, क्योंकि UV में क्या होता है, तुम्हारा जितना कंपाउंड तुम्हारा UV लाइट एब्सॉर्ब करता है, उस एब्सॉर्बेंस का रीडिंग हमें दिखाई देता है. So the amount of stray light which is transmitted is not much of the concern. So I am going to think that B is not what you say. This what is the control of transmitted radiation is not the option. So अगर ये सिंपल ये भी है कि डी एक ही ऑप्शन में है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. तो नाउ आई हैव A, B, C and E, which is the spectral slit width. Now the spectral slit width is also very important क्योंकि the amount of spectra which is entering through the slit, और वो slit is a part of the monochromator which is going to be housed inside your UV spectrometer. So that also needs to be calibrated. So without wasting much time, I will choose the option A, B, C, and E only. So that is my option. So I'm going to save and proceed next. Next is stationary phase used in gel permeation chromatography. Now chromatography which is involving the gel permeation, मतलब क्या होता है, तुम्हारे gel में कितना permeate हो रहा है तुम्हारा ions of the sample, and on that they are going to be separated as they travel through the gel. So abhi gel permeation mein I am damn sure alumina does not have gel like properties. Does alumina have gel like properties? Yes or no? इतना तो बताओ. No. Yes.
Similarly, charcoal के पास भी gel like properties नहीं है until unless you're going to disperse it in a polymer, और ऐसा कुछ specify किया नहीं है कि charcoal में polymer डाला हुआ है, so charcoal is also eliminated as an option. Now the options which I have is squalene and styrene divinyl benzene copolymer. Now between squalene, can anyone tell me what is the property of squalene? स्टेरॉइडल नेचर, Steroidal nature है, but क्या मतलब उसका, is it having a gel like consistency? अरे कुछ तो पता होगा. नो, Squalene is basically oily in nature and it is not having any gel-like property. क्योंकि अगर squalene is because of its highly oily nature, वो lipophilic compound को या hydrophilic compound को at a certain extent उसका travel through the gel में hinder करेगा. तो squalene is an oil. Basically, it has an oily property, so it is never going to be used as a gel in permeation chromatography. So squalene is also not. The only remaining is a styrene divinyl benzene copolymer, and polymers are always mostly in their gel-like structure. So that is the reason why the option which I will choose is styrene divinyl benzene, क्योंकि बाकी तीन options are not possible to be my answer. Save and next. Quickly, phenolphthalein has a pH range of which of the following? 8.3 to 11, 1 to 5. 8.3 to Yes, okay, very good. 1 to 5.6. So without wasting much time, ये मेमोरी में है, तुमने कहीं तो पढ़ा होगा phenolphthalein का pH रेंज ये है. So quickly ये सिलेक्ट करना है और आगे जाना है. Now, this is a MCQ involving a formula. So the hydrogen deficiency index for a compound with molecular formula C13H9N2O4BRS is option 9. Just a second, I'll and start my annotations. What happened? Oh, क्या हो गया ये? Shit. Okay. Now, sorry, I had clicked on some, tried to explain it to you, और उस चक्कर में शायद submit हो गया है. Okay, we'll start again. Which among the following has the highest thermal conductivity? Compressed air, helium, nitrogen, or oxygen? Anyone? Highest thermal conductivity. Helium. 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 Yes. So this is also a memory question. So I took less than 20 seconds. So I'll move on. Again, ये same question है discuss किया था. So I am not going to repeat. I'll choose option B, which is your control of wavelength, control of absorbance, resolution, as well as the spectral width, slit width. Save and next. Now, permitted tolerance. This is something you must have learned in Satoskar when you were in second year of your pharmacy. तभी तुम लोग का एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. Permitted tolerance limit for 100 ml class B volumetric flask and 1000 ml class B volumetric flask according to BS 1792 specifications respectively are is 1 to 10 ml permissible, or is it 0.8 to 0.3, 0.15 to 1.5, or is it 0.15 to 0.8? Anyone? तुम लोग ने पहले दिया है ना, ये स्किप करके सेव एंड नेक्स्ट करके वापस प्रीवियस में जा सकते हैं ना? यस मैम. हाँ, तो ये बाद में सोचेंगे, इसमें दिमाग लगाने का नहीं है. मेमोरी है, आई नो द आंसर, बट सिंस नन ऑफ यू वर एबल टू आंसर, आई विल स्किप टू द नेक्स्ट सो वी कैन सेव टाइम. I'll go back to it. Inert gas used in the ionization stage of mass spectrometry is it helium, argon, methane, or xenon? Anyone? Inert gas used in the ionization stage of mass spectrometry. argon maybe. No. It is neither helium, it is neither argon, and it is neither xenon. So in ionization, Methane, chemical ionization, methane. very good. So methane is the answer. Quickly, I'll select methane. Save and next. This is something very basic, which is included in Carl Fisher reagent. Is it iodine and pyridine, SO2, iodine, pyrimidine, SO2,
Iodine, pyridine, SO2, methanol, or is it iodine, pyridine, SO2, ethanol? Carl Fisher. Come on. चलो चलो, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ये तो फर्स्ट या सेकंड ईयर में टाइट्रेशन में पढ़ा होगा यार। कार्ल फिशर रिएजेंट वो तुम लोग का सब टाइट्रेशन वाइट्रेशन के सिलेबस में रहता है। मैम ऑप्शन ए। यस, वेरी गुड। हु इज दिस? यही पढ़ता है शायद, बाकी लोग पढ़ नहीं रहे। सेवन नेक्स्ट। फॉर कैलिब्रेशन ऑफ रेजोल्यूशन इन एवी यूवी सॉरी following is used. Is it holmium filter, polystyrene, potassium dichromate, or is it D, toluene and hexane? रेजोल्यूशन के लिए कौन सा यूज हो सकता है? टोलिन एंड हेक्सेन। Toluene and hexane. Option D. Very good. Save and next we'll proceed. Now, which among the following nuclei can exhibit NMR spectrum? Odd number of neutron, proton, कुछ तो लॉजिक बताया था, बोलो. Is it 28 silicon, 16 oxygen, 14 C or 14 N? बोलो बोलो. Option D. D. 14. Yes, very good. 14N. Save and next. Now, the derivatizing agent for TLC of steroidal compound is which of the following? Is it diphenyl carbazone, bromothymol blue, antimony trichloride, or is it Antimony trichloride. okay? Very easy. Antimony trichloride. So we'll save and go to the next question. Now, how many NMR signals are there in 1,2-dichloropropane? इसको स्किप करके पहले बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले। Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि इसको टाइम लगेगा मुझे समझाने, और उसके लिए आई नीड द व्हाइट बोर्ड, तो आई हैव अ फियर दैट आई विल एग्जिट द स्क्रीन एज वेल, सो उसके लिए फिनोल्फ्थालीन वही जो पहले डिस्कस किया था 8.3 to 11. So save and next. Now, what useful information can be found from a Van Demeter plot? Can anyone tell me? Is it optimum column temperature, optimum mobile flow rate, or is it the selectivity factor, or is it all of the above? बोलो बोलो बोलो, दिमाग लगाओ थोड़ा. All of the above. No. No, optimum Selectivity. Option. No. What Selectivity factor. No, selectivity factor is one of the parameters of. It is not the reason why Van Demeter is. Option B. Ma'am, ma'am. B नहीं है, option B. B. Optimum mobile flow rate. Flow rate. अरे तुक्का क्यों मार रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ. मतलब अभी सिलेक्टिविटी नहीं है, ऑल अबाउट द नहीं है, तो फिर हाँ भाई बी होगा, ए होगा. बोलो बोलो, वैन डिम्टर क्या बताता है? अरे मैम फ्लो रेट. हाँ, वाई फ्लो रेट. फ्लो रेट मैम। Why flow rate? Because it is a linear relationship between the mobile phase velocity, which is considered by using the unit length of a separating column. So mobile phase velocity को determine करता है Van Demeter equation. So the option is optimum mobile flow rate. Moving on to the next. The stationary phase used in gel permeation chromatography पहले discuss किया था. So it is styrene divinyl benzene copolymer. So I'll save and go to the next question. Now, jog your memory again. Kirchhoff's law is associated with which of the following? Is it the IR, the atomic absorption spectroscopy, is it NMR or the Raman spectroscopy? बोलो बोलो. NMR में Kirchhoff's law था. Let us eliminate one by one option. नो. No, नहीं. ma'am. IR में था. नो. No. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी IR से थोड़ा बहुत आजू बाजू रिलेटेड है. Yes, rotation. हाँ, rotation. So which is the only surviving option which will not which will require Kirchhoff's law? क्या है ये? Atomic absorption spectroscopy. हाँ. So when I don't know the answer, I simply eliminated IR, तो definitely नहीं है. NMR भी नहीं है. बचा रमन और atomic absorption spectroscopy. So Raman spectroscopy is very related to the IR spectroscopy. So Raman spectroscopy also cannot be the answer. The answer is atomic absorption spectroscopy. So I'll save and proceed to the next.
The wavelength at which, this is very simple, at maximum absorption of radiation takes place, उसको क्या बोलते हैं? Lambda max, beta max, alpha max, A max. Lambda max. Lambda हाँ, max. हाँ, ये तो बहुत easy है, चलो. Moving on, the principle of gas-liquid chromatography. Gas-liquid chromatography is affinity chromatography, is it adsorption chromatography, is it ion exchange chromatography, or is it partition chromatography? चलो बताओ. Partition 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 chromatography. हाँ, very good. So it is the partition chromatography. So I'll move on. What is the approximate chemical shift range for protons attached to aldehyde groups? When I tell you कि NMR में chemical shift values याद करके जाना है GPAT में, this is the reason why I tell you, because ऐसे questions आते हैं. aldehyde groups के लिए कौन सा है range? चलो बताओ. Anyone remembers? I'll tell you. See, it cannot be option D because aldehyde में कार्बोनिल कार्बन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इतना लो Ma'am, केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगा. हाँ, Option क्या हो? C. हाँ, क्यों है ऑप्शन सी? याद था तुम्हें इसीलिए. हाँ मैम, somewhat 10 के अराउंड था. हाँ, तो ये देखो एक 9 सिंपल to एक 10 है मैम. हाँ, तो एक सिंपल, अभी 9 to 10 एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं है, तो द क्लोजेस्ट ऑप्शन टू 9 to 10 इज 9.5 to 10. सो डी कैन नॉट बी द ऑप्शन बिकॉज कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसका इतना लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू नहीं होगा. ऑप्शन ए भी नहीं होगा क्योंकि ये मोस्टली 6 to 7.9 एरोमेटिक रिंग्स का होता है, बिकॉज इज वेरी सिंपल. तो बचा ऑप्शन बी और सी. So which is the most likely? It is C, 9.5 to 10. The actual range is 9 to 10. So I'll proceed now. Which one of the following can be used as a target material for X-ray production? Is it sodium, aluminium, copper, or xenon? Target material for X-ray production. Anyone? Come on. हम्म, कोई नहीं बोल पा रहा है. I got a chat. ये पहले का है अभी का है? See, for this you have to study about X-ray production. Wait, I got one chat. Naumam, okay, very good. Naumam has given the right answer. I think Samir was also answering the same question. The answer is copper. Copper is the most likely target material for production of X-ray. So let's move on. Copper is the answer. Next is in Moore's method of precipitation titration, which of the following indicator is used? Is it fluorescein, potassium chromate, ferric ion, or NaCl solution? Come on, easy है. बताओ बताओ बताओ. Moore's method of precipitation titration क्या यूज होता है? Potassium chromate. Potassium chromate. Very good. Option B. So these are all based on memory. There is nothing to explain. You have to study and you have to remember all these things. Next, which of the following is an example of atomic spectra? UV, colorimetry, fluorimetry, or flame photometry? It can't be UV because UV is not a UV is not atomic spectra, it is absorption spectra. Colorimetry, it detects the colored product that is produced. Fluorimetry detects the amount of fluorescence. So which is the answer? The flame photometry. Okay. 7 next. The solvent in NMR spectroscopy with the highest level of deuteration among these is which of the following? Is it deuteriochloroform, deuteriomethanol, is it deuteria acetone, or is it deuterium oxide? Option A. No, CDCl3 is not the one with the highest deuteration.
Highest deuteration, come on. Option D. Option D. नहीं, Deuterium एक मिनट, ड्यूटरेशन मतलब क्या? यू आर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन आयंस विथ ड्यूटेरियम आयंस, एम आई राइट? Yes. तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कौन से कंपाउंड में? क्लोरोफॉर्म में, मिथेनॉल में या एसीटोन में? अरे क्लोरोफॉर्म CH Cl3, मिथेनॉल इज CH3OH. इट इज एसीटोन. एसीटोन में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कंपेयर टू ऑल द थ्री. तो सबसे ज्यादा ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट भी एसीटोन होगा. समझा? समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो क्या कॉमन सेंस? ऐसे कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो कैसे होगा? क्लोरोफॉर्म बोल दिया चिल्ला चिल्ला के, ऐसे थोड़ी होता है. अरे पढ़ो तो सही, क्वेश्चन में क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्यूटरेशन, यू हैव टू रिप्लेस हाइड्रोजन विद ड्यूटेरियम. तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में होगा वो हाईली ड्यूटरेटेड होगा. शे मेरे बच्चे. A compound gives two fragments in a mass spectrometer. They are C19H7N plus and C19H5O plus. To separate peaks due to these fragments, the instrument should have a resolution of, they cannot be separated, 3.402 into 10 raised to 4, 2.417 into 10 raised to minus 2, or is it 1.042 into 10 raised to 4? Can anyone tell me? मेरी चाय ठंडी हो गई तुम लोग के चक्कर में. First hint is to calculate the molecular weight of both the fragments. चलो फटाफट दोनों का फ्रैगमेंट का कैलकुलेट करो. You have only 30 seconds more to calculate. चलो 1 मिनट ले लो. 1 मिनट के अंदर मुझे चैट में या जोर से कोई भी बोलो. I want the molecular formula. Come on. We have plenty of time because I have attempted 21 questions in short. And I still have 45 minutes remaining. यार मोबाइल कैलसी तो रहता है ना सबके पास. चलो कैलकुलेट करो फटफट. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 14, हाँ, तो कार्बन का, 12. मैम हाइड्रोजन का, हाँ 249 आ रहा है. दोनों का. सेम हाँ. सेम बोथ. हाँ, अभी अगर दोनों का सेम आ रहा है, भले ही द फ्रैगमेंट्स आर डिफरेंट, बट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री केपेबल ऑफ फाइंडिंग द फंक्शनल ग्रुप? अगर मेरे दोनों फ्रैगमेंट सेम मॉलिक्यूलर mass के है, now according to the mass to charge ratio, the mass spectrometer will separate ions based upon their mass to charge ratio. Now if the fragment or the molecular ions are having the same molecular weight, will I get a single peak in my spectra, or will I get two double peaks, or will I get two closely what you say, chipcofied peaks? What is it? Close peak overlap. That will depend on your ionization. अगर मेरा नेगेटिव आयन है तो मॉलिक्यूलर वेट का -1 होगा. अगर मेरा जो आयन्स प्रोड्यूस वो पॉजिटिव आयन है तो मॉलिक्यूलर वेट का +1 होगा. So in that case, if two fragments are having the, see there is a formula which is like for calculating the mass spectrometry, जहाँ पे हाफ लेंथ लेके second mass को divide करेंगे with the second mass. It's a big formula, but this is something very common sense. That formula also I'll tell you, don't worry. अभी इसमें क्या होता है कि ये जो है तुम्हारा, when you are having two fragments with the same molecular formula, it is very likely, depending upon the sensitivity of your instrument, how capable it is to and how sensitive it is,
In old traditional instruments, you'll get only one single peak with higher intensity, which will give an idea कि अरे भाई सेम मॉलिक्यूलर मास का दो फ्रैगमेंट है शायद, इसीलिए इसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा है. Or else they will be two very closely related peaks. But in mass spectrometer, you will ionize the sample only based on कि तुम्हें negative ions चाहिए या positive ions चाहिए. So in that case, if the ionization technique is producing positive ions, so it will always be +1. And if it is you're using a negative ion mode, so then you will have a -1. So the probable answer is they cannot be separated because none of the values will match the value of the one given here. Because the formula is M2, that is the mass of the second fragment divided by the mass of the second fragment minus the mass of the first fragment. तो second fragment का 249 है, divided by 249 minus 249, answer is 0. So it is none of the options have the answer 0. So the probable answer is they cannot be separated until unless you are using some other different techniques, like you are further fragmenting the ions. अगर तुम फर्दर फ्रैगमेंट करोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ये दो सेम फ्रैगमेंट्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है दैट यू आर गोइंग टू undergo further fragmentation. There is only one single fragmentation और इसमें दोनों fragments are of same molecular weight, so they cannot be separated and they will appear as only one single high intense peak or very closely related, मतलब close, it will be difficult to resolute those two peaks. So they cannot be separated is my answer. So I'll move ahead. The following can determine the protein structure except which? Mass spectrometry, X-ray crystallography, HPLC, NMR spectroscopy. Which is the answer? Is it option 1, 2, 3 or 4? प्रोटीन स्ट्रक्चर कौन डिटरमाइन कर पाएगा? एक्सरे एक्सरे नहीं मैम, एक्सरे करते हैं. नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. द X-ray फॉलोइंग पूछा. कैन, हाँ, द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा टेक्निक है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं कर सकता? मैम इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. नहीं, एनएमआर मैम स्पेक्ट्रोस्कोपी. हाँ, बोलो, मास बोलो. में वी नीड सैंपल इन अ गैसियस फॉर्म ना. प्रोटीन को अगर गैसियस फॉर्म में लाइक टेम्परेचर हीट करके किया तो प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं ना हाई टेम्परेचर पे. हाँ, बट अगर तुम प्रोटीन को डेरिवेटाइज करोगे तो प्लाज्मा एनालिसिस कैसे होता है? प्लाज्मा में तो ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं, फिर कैसे करते हो मास से? बायो एनालिसिस में क्या होता है? यू हैव ब्लड प्रोडक्ट्स, blood and blood products have lot of proteins in them, so you extract the drug out of those proteins क्योंकि majority of the drugs are protein bound. तो प्रोटीन बाइंडिंग को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके वो ड्रग को तुम एनालाइज कर सकते हो. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम प्रोटीन सैंपल्स को एनालाइज नहीं कर सकते. इवन इफ यू वांट टू calculate the amount of drug attached to your particular body protein, you can do it by mass spectrometry. HPLC में होता है क्या? है, बोलो. HPLC क्या करता है, बोलो. नहीं नहीं मैम. नहीं देखो, अभी कंफ्यूजन 1 और 3 में बराबर. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में प्रोटीन स्ट्रक्चर पता चलता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी प्रोटीन स्ट्रक्चर पता चलता है. यू कम टू नो अबाउट द नेबरिंग हाइड्रोजन्स, so definitely you are going to know. See yaar, I tried to admit that girl and am I the only host here? नो आई एम हियर तनुश्री. अच्छा, तू है क्या? फालतू में देखना, उसको एक्सेप्ट करने के चक्कर में मेरा ये हो गया. चल अभी फटाफट कर लेते. एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बराबर 7. नेक्स्ट पार्टीशन. नेक्स्ट, ये सब हो गया, इसलिए मैं फटाफट फटाफट कर रही हूँ. कैलिब्रेशन ऑफ हेक्सेन, हाँ, ये हमने स्किप किया था, इसको वापस स्किप करूंगी. इनर्ट गैस मीथेन,
The stationary phase use styrene diagonal, penicillin copolymer, iodine and pyridine. They cannot be separated. Say next. Light is in double. हाँ ये नहीं हुआ था शायद. The following light is measured in turbidimetry. Is it scattered light, reflected, dispersed or transmitted? Scattered. Scattered. No. Transmitted. How? Very good. Who was that? कौन बोला अभी आंसर? स्कैटर्ड वाले बच्चे मार खाएंगे अभी ऐसे तुम लोग एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे. क्या होता है टर्बिडिमेट्री में? It is simply the process of measuring the loss of intensity of transmitted light due to scattering effect. वो scattering effect के वजह से होता है लेकिन transmitted light को हम measure करते हैं. So the answer is confusing between scattered and transmitted. ये याद रखना. Light scattering के वजह से we can find how much turbid your sample is. Why? Because after scattering of light, there is another phenomena occurring, which is the transmitted loss of transmission of the light. तो जब वो transmitted light का loss होता है, उसी loss को हम measure करते हैं. So the light which is measured in turbidimetry is transmitted, not scattered. समझा सबको? Yes, ma'am. हाँ, ये permitted tolerance ये skip किया था. So this is something of very like you should know. Like पढ़ लेना Google करके या तुम्हारे books में से. The permitted level of tolerance is 0.15 to 0.8. ठीक है? For 100 ml class B volumetric flask and for 1000 ml class B volumetric flask. 7 next. Moving on. ये more titration का potassium chromate. 8.3 to 11. Atomic flame photometry. हाँ ये भी स्किप किया था. ये बाद में करेंगे क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा. ये ऑप्टिमम मोबाइल फ्लो रेट था उसका एल्डिहाइड ग्रुप्स का. Which among the following has the highest thermal conductivity to helium? Deuterium acetone. Kirchhoff's law atomic absorption spectroscopy. Copper for X-ray production. हाँ ये भी स्किप किया था. इसको भी मैं वापस स्किप करती हूँ. पहले अटेम्प्ट कर लेती हूँ सारे. Lambda max. A, B, C and E only. हाँ ये क्वेश्चन था. डिटरमाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर. सो योर HPLC में क्या होता है? HPLC is capable of only separating your compound. तो भले ही तुम analyte, it is a type of separation technique. It is not type of an analytical technique. सेपरेशन के बाद जब वो रिस्पेक्टिव डिटेक्टर में अटैच्ड होगा, जैसे कि यू हैव अ यूवी डिटेक्टर, you have a refractive index detector, or you have a mass detector attached to your HPLC system, like the hyphenated technique जो होता है LCMS, where you have the liquid chromatography which will separate your compound and the mass detector which will detect the separated compound. तो गैस क्रोमेटोग्राफी ये सब वगैरह जितने भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है HPLC में, you cannot determine the protein structure, you can only separate your protein. So after separation, you can use detectors to detect and find out the protein structure. Is it clear? So the option is 3 HPLC. समझा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा हो गया क्या? सब मैंने अटेम्प्ट कर लिए. Okay, now I'll go back to the questions which I have not attempted. Question number 5. Now quickly draw the structure. I will not be able to draw here. यहाँ पे मेरे annotation काम नहीं कर रहे. So later I will go to the, after submitting the test, I'll go to the whiteboard. तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इज इट समथिंग सिमिलर लाइक अ टी प्लस साइन? Yes, ma'am. तो अभी एक बात बताओ, जितने भी मिथाइल ग्रुप्स है सब सिमेट्रिकल है? Yes. Yes. Yes, ma'am. हाँ. So now because all the hydrogens and the neighboring hydrogens of the methyl groups are existing in the same chemical environment, they will neither show a doublet, neither a triplet nor a quartet, but will appear as a singlet. जैसे कि तुम्हारा टेट्रामिथाइल सिलेन भी सिमेट्रिकल है, इसीलिए उसका एक सिंगल ये आता है. और उसके हाइड्रोजन्स क्या होते हैं सिली टेट्रामिथाइल सिलेन में? अरे बताओ.
छोड़ जाने दो, क्या है टेट्रामेथिल्सिलिन देख लेना बाद में. So the answer is a singlet because all the methyl groups are existing in the same chemical environment and are symmetrical. They will only appear as a single intensified peak. And next we'll go to option number 15, which I have not attempted here. Hydrogen deficiency index. Now मुझे कोई बताएगा hydrogen deficiency index का formula क्या है? Anybody? See, if I'm not wrong, the formula for calculating hydrogen deficiency, I'll write it on the whiteboard later. अभी फटाफट कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. Last time when the test exited, there was something half an hour remaining. So two number of carbons plus 2 plus nitrogen minus hydrogen minus halogen divided by 2 is the formula. So after substituting all the values, the number of carbons, the number of hydrogens, nitrogen bhi hai, halogen bhi hai, which is bromine. So after substituting all of the number of atoms in the formula, the possible answer that I get is 10. How? I'll solve it on the whiteboard. So the answer is 10. So I'm going to save it and go to the next question. Now 22 is something I did not attempt. Now again, how many NMR signals are there in 1,2-dichloropropane? कोई dichloropropane का structure फटाक से बनाओ. चलो 5 मिनट के अंदर ये सॉल्व करके सबमिट करना है. Then our time will be done. How many NMR signals are there in 1,2-dichloropropane? Two, 4, 5 or 3? It can't be 2. Can it be 2? No, ma'am. 3, ma'am. No. It's not 3. It's not 2. 5 भी नहीं है. Why is it not 3? You can see that it is 1,2-dichloro. So the chlorine group is electronegative and will hamper the electronic environment of the neighboring hydrogens. The answer is 4. So 1,2-dichloropropane will have 4 signals. Now how? That I will show you in the whiteboard. So you can see here in this window, I have attempted. We started the lecture at 6:40 and it is 7:18 now. So in less than 1 hour, I have, in spite of so many obstacles, I have completed. Now I'll submit the test. Okay. Score is 100 out of 100 because I know all the answers. Yay. Now I'll explain to you about all this, okay? Hydrogen deficiency index in that answer. सब लोग ready रहो तुम्हारे pen and notebook and paper or whatever you have. Now hydrogen deficiency index का formula है. You should know all this, huh? Now I am telling you, but ये सब पढ़ के जाओ please. कितने नंबर ऑफ कार्बन है? अरे 13. देखो इधर. हाँ. नाइट्रोजन कितने हैं? कितने नाइट्रोजन है? 2, हाइड्रोजन 9, हाइड्रोजन कितने हैं? 1. 1. सॉल्व करो अभी कैलकुलेटर से, देखो आंसर कितना आता है.
10. सबको मिला? एवरीवन गॉट द आंसर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये फॉर्मूला याद करके जाना। तो कोई भी मॉलिक्यूलर वेट दे, ये फॉर्मूला याद रखो। देखो ऑक्सीजन का लेना देना नहीं होता है तो फॉर्मूला में, so that is why oxygen and S was ignored here, but bromine is a halogen, so you should know halogens कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी सब याद रखना। And then carbon, number of carbons, number of hydrogens, number of nitrogens, and number of halogens are very important in calculating the hydrogen deficiency. So your answer among all the options was 10. So if I ये सब याद रखोगे तो solve करने में easy होगा। Now moving on, I have to go to 2,2-dimethyl propane. Singlet क्यों देता है? This is the possible structure of 2,2-dimethyl propane. Correct me if I'm wrong. Am I right? This is 2,2-dimethyl propane. Yes. Yes, ma'am. All are symmetrical. ये same chemical environment, so it will give you one singlet of an intensified peak. Moving on, जो next structure था, it was 1,2-dichloropropane. So this is the structure of 1,2-dichloropropane. 1. Am I right? Am I right or no? 1,2-dichloropropane. सही बना है कि नहीं? Yes, ma'am. और सिंपल में मैं बनाती हूँ for those who are having difficult to process. ये रहा 1, ये रहा 2-chloropropane. ठीक है? Now if you see at the structure, tell me the number of NMR signals. बोलो बोलो जल्दी। इसके बाजू में कितना हाइड्रोजन है? मिथाइल के बाजू में? और बोलो। अरे बोलो। ये जो मिथाइल ग्रुप है उसके बाजू में कितना हाइड्रोजन है? 1, ma'am. तो क्या देगा? डबलेट। 3 हाइड्रोजन वाला कंपाउंड तुम्हें डबलेट दे रहा है। अभी जो बीच वाला कार्बन है उसके पास कितने आजू बाजू में हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5। एम आई राइट? Yes, ma'am. तो क्या देगा? सेक्सटेट। नाउ दिस कार्बन हियर, उसके बाजू में कितने हैं? हाँ 1. हाँ, तो ये भी देगा एक डबलेट और ये एक सिंगलेट, ये और एक पीक होगा मिथाइल ग्रुप का। नाउ हाउ आई सिंप्लीफाई। नाउ लेट अस लुक इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर तुमको मल्टीप्लिसिटी से सॉल्व नहीं करना है तो ठीक है। वन सिग्नल विल बी गिवन बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ द मिथाइल ग्रुप, राइट? सेकेंड सिग्नल विल बी गिवन बाय दिस प्रोटॉन। व्हाई? क्योंकि इसके बाजू में क्लोरीन है। अभी इसके बाजू में भी क्लोरीन है लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ रोटेशन, सो दिस विल अगेन गिव यू अ थर्ड सिग्नल। एम आई राइट? अभी ये जो हाइड्रोजन है इसके बाजू में एक हाइड्रोजन है लेकिन इसके बाजू में एक क्लोरीन भी है, so this will again give you a second signal. So even in terms of multiplicities, if you are not able to solve, if you calculate ये CH3 के जितने हाइड्रोजन है that will give you one signal. फिर ये जो Cl के H है that will give you one signal. वापस ये
CCl के जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन एक सिग्नल देगा, and then again because these two cannot be equivalent because of the chlorine group here, so again they are going to give you the fourth signal. Is it clear now? सबको समझा why it is giving 4 and not 3? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so test was very simple. Anyone has any doubts? और कुछ skip किया हमने? नहीं ना? Rest of it was simple. Yes, ma'am. चलो, किसी को कोई भी डाउट रहेगा, so you can ask me. I gave you my number in the previous lecture. So you can contact me if you want, if you have any doubts, if you come across any MCQs. और इतना याद रखो, I'll give you one tip. It is not possible to read everything about so many subjects all at once before your GPAT examination. है कि नहीं? Yes or no? Yes, ma'am. अभी Yes, तुम्हारे ma'am. पास 1 महीने का टाइम है, right? You have 1 month of time. So when you are having 1 month of time, एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक सेक्शन कंप्लीट करो. So I will talk in terms of analysis. Analysis is the most easiest subject to cover in terms of GPAT, क्योंकि इतना ज्यादा चीजें नहीं होती है, because you don't have to remember so many drugs like pharmacology or so many reactions like organic chemistry or medicinal chemistry. तो सबसे पहले तो अगर टाइट्रेशन का पार्ट कर रहे हो तो सारे टाइट्रेशन एक दिन में कवर करना. इन 1 डे स्टार्ट मेकिंग रफ नोट्स और फ्लो चार्ट मिनिमल. जितना कम समय में जितने छोटे और प्रिसाइज नोट्स बनाओगे उतना इजी होगा. जैसे कि नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस, तो उसके अलग अलग इंडिकेटर, कौन से इसमें क्या है, कौन से आयंस डिटेक्ट होते हैं, कौन से इसमें, सब फटफट छोटे छोटे फ्लो चार्ट में बना लेने हैं. फिर जो स्पेक्ट्रास है, जैसे कि यू हैव NMR, IR, UV, वो भी एक तरीके से सबका, जैसे कि यू हैड टू रिमेम्बर द हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स फॉर्मूला, देन यू हैव टू रिमेम्बर द सर्टेन केमिकल शिफ्ट वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स, तो वो सब रिमेम्बर कर लेना. मास स्पेक्ट्रोमेट्री में फ्रैगमेंटेशन पाथवे याद कर लेना, क्योंकि इन सम ऑफ द क्वेश्चंस दे विल आस्क यू व्हाट कैन बी द पॉसिबल, they will give you a structure and they'll give you 4 options of the different structures के fragments. तो वैसे पाथवे अल्कोहल का, अमाइंस का, वो कितना सब दिया है मैंने, वो थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना कि which could be a possible fragment. नेक्स्ट, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, फिर जो भी क्रोमेटोग्राफी है उसके बेसिक प्रिंसिपल, उसके जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सब थोड़े थोड़े ध्यान रख के पढ़ लेना. सब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. ट्राई टू मेक प्रिसाइज मैक्सिमम नोट्स, एंड the more you try to solve MCQs, the more you will be able to face such questions. So you all must be having your books. I think PHARMACAD has given you enough MCQs during the test series also. तो वो सारे MCQs रिव्यू कर लो. जितना ज्यादा MCQs सॉल्व करोगे उतना इजी हो जाएगा. You can find multiple choice questions online also. Like there are some sites where you have the Oxford के sites होते हैं, या there are many multiple sites. You just have to Google like MCQs on trituration. तो इतने सारे आ जाएंगे. Some are with answers, some are without answers. तो जो विथ आंसर्स है वो आंसर्स को देखे बगैर ट्राई करो सॉल्व करना. तो जितना ज्यादा तुम MCQ सॉल्व करोगे उतना इजी होगा तुम्हारे लिए सॉल्व करना पेपर. एंड डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हिच यू ऑलरेडी नो एंड यू आर श्योर ऑफ. तो वो सारे क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर लेना. और जो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस है वो थोड़ा एंड में रखना, क्योंकि क्या होता है यूजुअली व्हेन यू हैव लाइक फार्मास्यूटिक्स में भी तुम्हारा फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक ऑन द यंग्स फॉर्मूला, वो सब फॉर्मूला पे भी MCQs आते हैं. तो माय टिप टू यू इज कि जो भी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसको साइड में कर लो. जो वर्ड वाले क्वेश्चंस है, लाइक फॉर दोज व्हिच यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, उसको पहले अटेम्प्ट कर लो. मैच द फॉलोइंग वाले टाइप क्वेश्चंस आएंगे फार्माकोग्नोसी के, वो सब तुम पहले सॉल्व कर लो. एंड व्हेन यू विल हैव sufficient time, then you try to solve the one with the calculation. अगर easy calculation होगा, जैसे कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के takes less than 1 minute to solve, तो वो तुम फटाफट अटेम्प्ट कर लो. लेकिन अगर दिमाग लगाने वाला है, जैसे कि स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, फॉर दोस क्वेश्चंस आई विल टेल यू कि शांत दिमाग में
उसको बाद में सॉल्व करना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इफ यू वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू हैव लेस टाइम रिमेनिंग फॉर द अदर इजीली आंसरेबल क्वेश्चंस। तो पहले थ्योरेटिकल वाले जितने भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद द ones which you need to calculate, that you can attempt. And also don't try to attempt questions जिसके answers का you have no clue, because there will be questions in which you will have no clue at all, like अरे ये हमारे syllabus में भी था, ऐसे भी सवाल आ सकता है, ऐसे questions आएंगे। So in that also don't try to use your brains too much and waste time, तो उसको भी end में रख देना। So such type of questions you solve in the end, पहले श्योर शॉट वाले सब सॉल्व कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है, जो इसीलिए जो श्योर शॉट है उसको पहले सॉल्व करना, कैलकुलेशंस वाले उसके बाद सॉल्व करना, और जिसमें दिमाग लगाना है या गेस वर्क करना है उसको सबसे एंड में सॉल्व करना। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर टेरिटरी इज कवर्ड वेयर यू नो द श्योर शॉट आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। तो जो जो क्वेश्चंस के श्योर शॉट आंसर्स है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना, विच इज द सेफ साइड, सो दैट इवन इफ यू लैक टाइम यू कैन एटलीस्ट हैव वेट कि भाई जितने मैंने अटेम्प्ट किए वो पक्का राइट है, और मेरा रैंक आएगा ही आएगा 2000 के बीच में अंदर, एंड आई विल डेफिनेटली क्वालिफाई, अगर उतनी बुरी हालत है तो। एंड ऑब्वियसली इफ ऑल इंडिया रैंक 63, 16, 12 लाना है, तो यू हैव टू बी लाइक वेरी ब्रिलियंट इन। So that is all for today. I hope you know how you will proceed with the solving. If any of you have any doubts, you're free to ask. We'll end the lecture now, okay? Okay, ma'am. Thank Yes, you, ma'am. ma'am. Okay, ma'am.